Hi friends, welcome to my channel. Friends, in this video we are going to see C++ programming, which is important for board for 10 marks. With option it will be for 20 marks, so compulsory you have to attend for 10 marks. Okay, let's see. We'll start with the basic board programs in which you are having GCD. It may come with LCM or without that also. Okay, now the next number is to exchange the content of two variable, or by using swap function it may appear in any of these two pattern. Then Fibonacci series for 15 term, it may ask for 13 term, 11 term, 8 term or n term. So program format is same. Now the next is to find out factorial of a number. Okay, so factorial of a number and factorial for 10 number or 5 number, both the programs are different. We are having two for loop if you are calculating for 5 or 10 numbers. Okay, now next is Armstrong number, palindrome number, sum of its digits. Okay, so if you are having 156, so you have to find out the total of 1 plus 5 plus 6 here. Now check whether entered number is prime or not. So these are your basic programs. Now the next one is array. You have to take array of 10 numbers and print sum and average for those numbers. Next, to find out area of a circle. Circle की जगह कुछ भी हो or object, you have to find out. Okay, just you have to change the formula. Now you have to sort 10 numbers. Okay, so this is your bubble sorting. Now here you are having C++ program to read an integer and find out its sum. ओके तो ये वही प्रीवियस प्रोग्राम ही है, बट द पैटर्न कि वो बोर्ड में कैसे पूछा है, यहाँ पर जो हमने ये वाला पढ़ा था और यहाँ पर बस ये दिस इज आस्क्ड इन टू ways. Now these are your class based and function based programming, in which this temperature class is very much important. If here you have given that use this function name, okay, अगर आपके function का नाम यहाँ पे mention होगा program में, so please use those function name only. Okay, if you are changing function name by your own, like here it is given that class name is temperature, so you have to maintain class name as temperature. Okay, otherwise आपका marks जो होगा उसमें से फिर कम हो जाएगा. यहाँ पे भी आपको mention है कि अगर आप पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको जो डेटा टाइप है वो क्या लेना है, यहाँ पे फ्लोट लेना है, क्लास का नाम क्या है, सर्कल है. सो इफ यू आर mentioning your basic program to find out this, so you will get 0 mark. Okay, so here you have to implement class circle, or you have to use the syntax of class. Same way class based program, हमने जितने भी basic programs पढ़े अभी तक, वो सभी को क्लास का सिंटैक्स यूज करके आपको करना है. ओके, तो अगर आपका क्लास का सिंटैक्स और क्लास टॉपिक आपका C++ का बहुत अच्छे से क्लियर है, सो यू कैन डू ऑल बेसिक प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास. सो दीज आर योर बेसिक प्रोग्राम्स ओनली, बट यहाँ पे क्या यूज करना है, क्लास. दिस इज योर फंक्शन बेस टू फाइंड आउट मिनिमम ऑफ 4 numbers. Okay, and this is also function based programming, where you have to find out circumference of a circle. Okay, so you have to use formula as 2 pi r, और यहाँ पे function use करके करना है. यहाँ पर भी तो आपको बस, अगर आपने बेसिक प्रोग्राम सारे किए हैं, तो बस आपको वो बाइफरकेट करके, या अगर आपको सिंटैक्स पता है तो फंक्शन बेस्ड कैसे करना है, क्लास बेस्ड कैसे करना है, और बेसिक पैटर्न में कैसे करना है, बस यही आपको समझना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3. ओके, एंड लास्ट, स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम. सो कीप इन माइंड, इफ यू आर यूजिंग और इफ यू आर डूइंग स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम, सो यू हैव टू यूज string.h फाइल in your program, okay, without fail. So these are some of the repeated programs, that is you have to
replace space by hyphen, space by any character, or space by, or to count the number of characters. It may be J, K, LM, कुछ भी कैरेक्टर हो आपका प्रोग्राम सेम होगा, जस्ट वो J रिप्लेस करके आपको वो कैरेक्टर एंटर करना है. ओके, नाउ यहाँ पे जो ये प्रोग्राम है इसमें आपको वर्ड्स कितने हैं वो काउंट करके मेंशन करना है. So here you will use one counter as count to count the words, and जैसे ही space encounter होगा, what is the meaning? We got one word. Okay, and last is to reverse a string which you are having in your practical also. So these are the basic string based programming. तो इसके भी chances काफी रहते ही हैं पेपर में. So please go through it and do it very properly and include that string.h file also for string programming. Okay, so do it very well and practice it more and more with writing and with compilation. And for your board, compilation is not compulsory, it is for you to learn. Okay, so thank you class.